Good morning, Rajan ma'am. How are Good you? morning. Yeah, Fine. it's very nice to see you and wonderful to be here in this platform. Same here, ma'am. Yeah, we'll begin by 1 o'clock. We'll begin the program by one. Let just waiting for all the kids to join in. Okay, ma'am. Good Yeah, thank you afternoon, so much, ma'am. ma'am. Good Good afternoon, dear. afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Rajan ma'am is a special guest. Is our Good special afternoon, guest ma'am today. and sir. Good How are afternoon, you, ma'am and children. ma'am? Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? Good afternoon, teachers. Good How are you, ma'am? Good Good afternoon. afternoon, teachers. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? Are you fine, ma'am? All good, dear. How are you? You're fine, all ma'am. Good, ma'am. Yeah, all are fine, ma'am. Yeah, I think it's You're 1 p.m. looking so pretty, ma'am. Thank you, dear. I think we can begin. Dakshit and Yashna and Jeshu is there. Yeah. Yes. Yeah. Yep. सबको मेरा नमस्कार। यहाँ मैं प्राचार्य, उप प्राचार्य, मुख्य अतिथि माननीय राजन कौर और अन्य अध्यापिकाओं और मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूँ। Hello everyone. Here I welcome the principal, vice principal, chief guest Ms.Rajan Kaur and other teachers and my dear friends. सबसे पहले हम इस कार्यक्रम का आरंभ एक प्रार्थना और स्कूल एंथम से शुरू करेंगे। Let's rise up for the prayer by Sayeshwar, followed by the school anthem. Good afternoon, ma'am. दया करो गुरुनाथा कृपा करो गुरुनाथा दया करो गुरुनाथा कृपा करो गुरुनाथा गोविंद्र योगींद्र गुरुनाथा राम नाम सिद्धांत गुरुनाथा बोधेन्द्र योगींद्र गुरुनाथा राम नाम सिद्धांत गुरुनाथा दया करो गुरुनाथा कृपा करो गुरुनाथा
शुक्रिया सायशर। Thank you, everyone. अब मैं स्वागत भाषण के लिए रीना मैम को बुलाना चाहूंगा। Here is Reena ma'am to address the welcome speech. जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की भिंडी है। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आ खड़ा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के बाद देश के दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया। सोशल मीडिया और तकनीकी के इस युग में भी हिंदी की नींव खिली नहीं है, बल्कि ज्यादा प्रखर होकर और निखर कर हिंदी सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। मैं जो आज कुछ भी हूँ, मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाइए। आज इस मंच पर हमारे साथ गौरव बढ़ाने के लिए मिसेस राजन कौर जी उपस्थित है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वे न सिर्फ उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां और ख्यातियां प्राप्त की है। आई वेलकम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड आवर चीफ गेस्ट मिसेस राजन कौर. To mention about her, I will just tell you few of her achievements. She's been awarded as Best Speaker Award at Hindi Debate, and then she's been awarded with the second prize in the story writing competition, Anand Hindi Lekhan Puraskar for the Best Writing by Loyola College, the Teacher of the Year Award at Kerala Samajam Model School, Sachi Jamshedpur mein. Then first prize in poem writing competition on Mother's Day organized by a local daily Dainik Jagran. She's been awarded the Ambassador of the School Award at Kerala Samajam School. The other achievements which follows her are selected as a member of the interview board for the interview of the candidate for the All India Women's Conference in 2001 and for the Adarsh Kanya Uch Vidyalaya in 2006. A letter of appreciation and an advance increment granted for the sincere hard work and readiness to undertake any additional job. Letter of appreciation for the outstanding performance of our students in Hindi in ICSE and ISC examination. Not only this, the other achievements by her are she has conducted many workshops. To name a few, she has conducted a workshop on how to reduce correction work for teachers of Kerala Public School, and then workshop on activity-based teaching for teachers of Kerala Public School, workshops on how to teach Hindi effectively, a workshop on how to prepare syllabus for teachers of Jharkhand Education Project, conducted a session on leadership skills for students of Gamaria, a workshop on how to score better in exams for the Jharkhand government school teachers, a workshop on parenting for the residents of Sukinda, Orissa. I can keep on adding this, I can keep on go on like this. There are lots she has achieved. We should learn from her. She is a great inspiration to all of us here. Let us welcome her to enjoy this day with us. शुक्रिया रीना मैम। Thank you, Reena ma'am. क्या आप सबको पता है आज हम क्या मनाने वाले हैं?
Do you all know what are we going to celebrate today? ये बात हमें मायुका बताएगी। Mayuka will explain us about what are we going to celebrate today. नमस्ते, मेरा नाम मयूका प्रसाद है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस है। हमारी पाठशाला आज से मना रही है। आप सभी को इसमें स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया मायुका। Thank you, Mayuka. आज हम इस दिन को मनाने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Let's hear some poem from our little Kikanian's induction playing keyboard. कितने कपड़े लाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। धन्यवाद कलू। शुक्रिया छोटे सेना। Thank you. अब आपके सामने हम नृत्य पेश करने जा रहे हैं। Let's enjoy some foot tapping moments. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। शुक्रिया दोस्तों।
कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं माननीय राजम जी को बुलाना चाहूंगा अपनी कुछ बातें से हमें प्रेरित करने के लिए। Let us welcome our chief guest, Ms. Rajan ma'am, for an inspiring speech. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Am I Good audible? afternoon. First of all, I would like to thank your principal Shalini ma'am and the entire faculty. Because of me, you have changed the timing, because earlier I think it was from 9 o'clock or 9:30. And then according to my time, you have kept the program from 1 o'clock. So thank you, children, for participating in Hindi Diwas. Since it's a Hindi Diwas, so I will speak in Hindi. And listen carefully what I'm going to tell you about Hindi. होठ खामोश थे, सिसकियां कह गई, द्वार बंद थे, खिड़कियां कह गई, कुछ हमने कहा, कुछ हिंदी कह गई, जो न कह पाए वो हिचकियां कह गई। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जब कभी भी हमारी जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में हिंदी ही काम आती है। और हम सबको हिंदी भाषा में हम सबके साथ अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं। अभी आपकी मीना मैम ने बताया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो संसद से सड़क तक, साहित्य से सिनेमा तक सब जगह बोली और समझी जाती है। फिर भी आज हमारे लिए ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हम को हिंदी को उसकी पहचान दिलाने के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। पर मैं इसको दूसरे रूप में लूंगी कि हिंदी दिवस हम मना रहे हैं हिंदी को पहचान दिलाने के लिए नहीं, हिंदी के गौरव को बढ़ाने के लिए। क्या हमने आज तक कभी भी अंग्रेजी दिवस मनाया है? अगर आप इस दृष्टि से देखें तो हिंदी का दिवस मनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम जिस तरह से वीरों की शहादत का दिवस मनाते हैं, शिक्षकों के गौरव के लिए शिक्षक दिवस मनाते हैं, बच्चों के इम्पोर्टेंस के लिए बाल दिवस मनाते हैं, उसी तरह से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सब ने जो भी प्रोग्राम आज पेश किए, चाहे वो नृत्य था,
चाहे वो कविताओं का वाचन था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। मुझे आपकी मैम से पता चला कि ये हमारा नया स्कूल है, पर इस नए स्कूल में भी जिस तरह से आपने टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिस तरह से आपने तकनीकी को यूज करके इतने अच्छे ढंग से कार्यक्रम पेश किया, मैं बहुत खुश हूँ। और आप सबको बच्चों पता होना चाहिए कि चीनी भाषा के बाद हिंदी जो है विश्व की सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। ठीक है, हम लोग अगर देखें तो करीब 70 करोड़ लोग, हमारे देश में जितनी आबादी है उसके 70 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो इसीलिए हमको समझ जाना चाहिए कि हिंदी का इम्पोर्टेंस क्या है। आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर भी आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी उतनी अच्छी तरह से बोल रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको और 4 पंक्तियां, चूंकि मैं कविताएं लिखती हूँ, और मैं आप सबको बता दूं कि मेरी कविताएं जो हैं प्रतिलिपि करके एक ऐप है, उस पर छपती हैं। तो अब तक मैंने पिछले साल पेंडेमिक जब शुरू हुआ था, तो उस समय मैंने ये कविताएं लिखनी शुरू की थी, और आज मेरे पास 410 कविताओं का संग्रह है। तो ये जो 4 पंक्तियां मैंने हिंदी के लिए लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, सेना के जवानों से उनकी गोलियों तक, एक बूंद एक बूंद जिंदगी की से पोलियो तक, हर जगह मातृभाषा का परचम लहराया है। हिंदी को हमने माना अपना सरमाया है। बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगी कि चाहे आप कोई भी भाषा सीखो, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, या आपके वहाँ की जो मातृभाषा है कोयम्बतूर की, उस भाषा में आप पढ़ते या लिखते हो, तो उसके बारे में बहुत मन लगाकर पढ़ो। जो भी करते हो पूरी आत्मा के साथ, पूरी जान डाल दो उसमें, अपना सब कुछ उसके ऊपर केंद्रित कर दो, और बाकी के सारे विचार किनारे कर दो, तो अपने आप सफल हो जाओगे। अभी किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा कि मैम आई डोंट नो हिंदी। पर बच्चों, अगर आप हिंदी सीख रहे हो, स्कूल में सिखाई जा रही है, तो आपको सीखने का बस यही एक तरीका है कि आप पूरी तरह से हिंदी के पीछे पड़ जाओ, तो हिंदी आप सीख लोगे। तभी ये हिंदी दिवस मनाने का फायदा है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जिस दिन आप अपने आप को कमजोर समझोगे, निर्बल समझोगे, तो आप निर्बल हो जाओगे। जिस दिन आप अपने आप को सबल समझोगे, आप सबल हो जाओगे। ठीक है। जो कुछ भी आपको देना है आप दीजिए, वापस आपको मिलेगा, तो वो दुगना होकर मिलेगा। पर उसके लिए हमको अभी से सोचना नहीं है। हमारे सामने 2 विकल्प हैं, या तो हम कोशिश करें या छोड़ दें। छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं टलता, ठीक वैसे ही छोड़ देने से कोई भी काम नहीं होता। तो जिंदगी में अगर सफल होना है, तो आपको किसी भी काम के पीछे, चाहे वो अंग्रेजी सीखना हो, चाहे वो हिंदी सीखना हो, आप उसके पीछे पड़ जाइए। ठीक है। तभी आप अच्छा इंसान बन पाओगे। ठीक है। और टीचर्स का मकसद आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाना है। सफल तो आप खुद ही हो जाओगे। ठीक है। जीवन में सक्सेस आपको खुद मिल जाएगी। और लास्ट में फिर 2 लाइनें बोलूंगी मैं आपको हिंदी में। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ओके। जब कभी भी आप मेहनत करोगे, see, if you are going to struggle, if you are going to fight against the obstacles, I'm sure you will be the winner. And I'm sure that you are going to learn Hindi, because many students are writing that we don't know Hindi. But children, since it's a very, very new school, and I know that your teachers are going to teach you Hindi, and if you have the desire to learn, you will learn. Okay. So all the best to all of you, all the participants and the anchors, and special thank
to your principal Shalini ma'am and Meena ma'am who spoke very highly about me. And children, I want to share one more thing with you, that yesterday again I have received a Best Hindi Teacher Award in Jamshedpur, given by Tulsi Bhavan. So I want to share with all of you my happiness, and I'm sure you will learn Hindi, you will listen to your teachers, and you'll be master. One day you'll be master in this subject. Thank you. Thank you once again to all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for calling me. Thank you, ma'am. Thank Bye, you. ma'am. Dakshin, you can take Thank over. you. Thank you, ma'am. Bye. Yeah. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Shukriya, ma'am. Rajan ma'am. Thank you for the inspiring speech, ma'am. Okay, bye. Welcome, beta. अब आप सब संगीत का मजा लीजिए. Now let's enjoy some music. भीजा तेरा रंग था मैं तो, भीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, ले ले मेरी जान, ले ले मेरी जान, भीजा तेरा रंग था मैं तो, भीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, ले ले मेरी जान, ले ले मेरी जान. तेरे संग खेली होली, तेरे संग की दिवाली, तेरे अदनों की छाया, तेरे संग सावन आया, फिर ले तू चाहे नजर, चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे, शर्त लगा ले, भीगा तेरा रंग था मैं तो, भीगा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, ले ले मेरी जान, ले ले मेरी जान. मेरी भी दूरी, वही मेरे ही अछूरी, वही रांझा मेरे वही, वही सेवैया वही, तुझसे भी रूठ नारी, तुझ
तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे दंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यहाँ, मौला मेरे ले मेरी जान, मौला मेरे ले मेरी जान, मौला मेरे ले मेरी जान, मौला मेरे ले मेरी जान। मेरा नाम साय अश्वर, मैं ग्रेड 7 पढ़ता हूँ। कर चले हम विदा जानो टन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जानो टन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस जमती गई, नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जानो टन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान जीने की रुट रोस आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो कुओं में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जानो टन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों। Thank you, friends. अब मैं अपने प्राचार्य मिसेस शालिनी मैम को बुलाना चाहूँगा। I am honored in welcoming our principal, Ms. Shalini Nair, for a few words. Thank you so much, Dakshit, and thank you, Yashna. भाषा केवल संबंध का माध्यम नहीं, हमारी शक्ति, संस्कृति, जीवन का आधार है। इसके मान, सम्मान, गौरव में ही हमारी उन्नति है। इसे आदर देना है, which means language is not just a pathway of communication, but it is our strength, it is our culture, and it gives us life to what we are as an Indian. And what better to have other than having with us, amongst us, Rajan ma'am, who has spoken about celebrating Hindi as a language. Thank you so much, ma'am, for being here and coming and spending your precious time with our children, with the parents. And I also thank Vijay ma'am. I think she has joined.
Is she there, or has Vijay ma'am left? Okay. So thank you so much, ma'am, for explaining to the children about what language is all about. I know children, as you have messaged in the chat box, that you don't understand the language. And very rightly, like Rajan ma'am has said, you are going to learn language, and that's why you are in the school. We are in this foothold where we learn languages to understand the culture, the deep culture. And do you know why Hindi Divas is celebrated today? What's so special on 14th September? Hindi Diwas. Yeah, why is it Hindi Divas? Why are we celebrating Hindi Divas? On this very day, Hindi was adopted as the official language in 1949. Okay, that is why we celebrate this day as Hindi Divas. And like Rajan ma'am rightly said, for Hindi, we need a day to celebrate, to remember the importance of Hindi in our life. But rightly, as ma'am said, we don't have an English day, we don't have a French day, we don't have a German day, if I believe. So, why do we neglect, or why do we not give importance to our national language and also our own language as a state? So when we learn more about languages, we connect to our roots, we connect to our nation. And as India, it's so rich with its culture. We need to position our language, we need to position ourselves in the global context and create a strong identity. Aren't we proud when you say, I'm an Indian, right? We are proud when you say, I am from India. Uh, of course, we do say, I am from Kashmir, I am from Mumbai, I am from Tamil Nadu, I am from Gujarat, I am from Meghalaya. But oh, above everything, we say we are an Indian and we are always proud to be India. So it is not just that Hindi is one of the most popular languages, but it is a bridge. It is a bridge to connect, as very rightly the children, when they did the campaign, they say connecting from Kashmir to Kanyakumari and the northeastern eastern states from Nagaland to Gujarat, uh, in the east and the west, connecting. And it is a responsibility, it is our responsibility to make use of it, to understand, because it is our cultural consciousness. It's the foundation of our cultural consciousness. It's the national unity, and it's a bridge between the ancient civilization, as ma'am has very rightly cited. After Chinese, what we are, what have we, how we have popularized the Hindi language. And it's a parallel development of Hindi as well as our languages, all the other languages which we speak. Do you know how many languages we speak in India? Do you have an idea how many languages we have in this 72. 72? It's a wide 22. 22, ma'am. 22, many 64, more. ma'am. You have to understand 1500. 1500. See, I'm 64. I'm 64, ma'am. 64. So how many of you have called Google uncle and Google auntie for this? We have around 121 languages and almost 270 mother languages, because 22 languages specified in the Constitution of India. Okay, that's mentioned in the Constitution. But apart from that, there are so many languages which are spoken in India, uh, like in different sectors. Even if you look at Tamil Nadu, or you look at any state, you will see the language is spoken in different dialects.
There are different words to one particular item. So that is how languages change, and it is vast. You can't even imagine what a language, what languages does to you when you appreciate, when you listen to the songs, when you listen to the poetry, wonderful poetry Rajan ma'am had just recited. It's so heart touching and heartwarming. Thank you so much, ma'am, for highlighting the importance of Hindi to our children, and of course other languages, because this is the progress of the nation. That is what I believe. And I also would like to give the Hindi Divas wishes to everyone, though, like rightly ma'am said, we shouldn't be celebrating. It should be a way of our life. We should celebrate Hindi every day. It's not this just one day we celebrate and we speak Hindi and we celebrate the songs and we dance, but it should be a way of life. Like I had told the junior children, how will you expand your vocabulary? How you expand the words is when you learn a language, when you learn English, when you learn Tamil, when you learn Hindi, you need to find out different words. Learn 5 words from the language every day, and you see how quickly you develop the vocabulary. And definitely, we will catch up on the assemblies to find out how many words you learned in a week. Just 5 words a day is more than enough. Yeah, and that's how you pick up the entire language of Hindi or English or Tamil for that matter. So thank you so much for being here. Wholeheartedly, congratulations to ma'am for winning the award today. It's such an auspicious moment, like a divine intervention that you are with us and we can celebrate your success today. Thank you so much, ma'am, for being here. And well done to all the participants, all the students, the Hindi department, Ms. Reena and Shivagami, ma'am. Both of them have been working, to get the children and bring out different performances by the children. So thank you so much. It was wonderful to be with you. And thank you so much, Rajan ma'am, to be here. Over to Dakshin. It's my pleasure, ma'am. It's my pleasure. I'm thinking that one day I should come physically to your school. Yes, ma'am. I'm being a part of your school. I'm just. Yes, ma'am. You, anybody who connects to us, you become a part of our family. So definitely, you should be visiting the school. It's still under the construction. By end of October, we are going to clear everything. The school is going to come live, and hopefully, if the pandemic ends, we'll have all the children. We'll be meeting them physically in school, and not virtually, because even children are tired of virtual classes. Don't you want to meet your friends, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Don't you want to meet Rajan ma'am? Yes, ma'am. So you need to invite Rajan ma'am, right? You need to welcome her to the ma'am. Children, I will definitely come to your school. I'm feeling proud that Welcome I have been invited for this program. So, welcome, ma'am. Yeah, thank you so much, Rajan ma'am. Please come to Tamil Nadu and Coimbatore and spend some days with us, spend some time with our children. It would be great pleasure to have you here. Okay, Thank ma'am. you. Bye. Thank you so much. Over to Dakshin and Yashna. शुक्रिया मैम। Thank you for the wonderful words, ma'am. अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए शिवगामी मैम को बुलाना चाहूंगा। Now I welcome Ms.Sivagamasundari ma'am for the vote of thanks. सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर के उत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं, जहाँ हम इस खूबसूरत उत्सव के अंत तक पहुँच गए हैं। यहाँ मौजूद मुख्य अतिथि माननीय राजन गौर जी, आपको व्यस्त कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हुए और इस दिन को हमारे लिए फलदायी बना दिया। हम किकानियंस आपको रहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जी। आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य और अन्य अध्यापिका तक दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं हर छात्र की ओर से हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।
इस तरह के एक बड़े समारोह का आयोजन करने और हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए हमारी प्रबंध समिति का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। शुक्रिया शिवगामी मैम। थैंक यू मैम। आशा है सबको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी भी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहता हूँ। Thank you, Dakshit. Now let's rise up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा